Today's topic is environment and human health. This is the topic in your syllabus, and the subject is environmental science and disaster management. Firstly, I will explain the definition of health. According to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of diseases or infirmity. The next is impact of environment on human health. There are different points under the impact of environment on human health are as follows. The first is that the environment plays a very crucial role in people's physical, mental, and social well-being. The second is the all organisms depend on their environments for energy and materials needed to sustain life. That is clean air, potable water, nutritious food, and safe places to live. Third is for most of human history, increases in longevity were due to improved access to these necessities. Advances in agriculture, sanitation, water treatment, and hygiene have had a far greater impact on human health than medical technology. As we know that sanitation and water treatment is very indispensable for all the human being, and otherwise they are very bad effect on human health than medical technology. The next is the environment which sustains human life can causes disease. The lack of basic necessities is a significant cause of human mortality. Environmental hazards increase the risk of cancer, heart disease, asthma, and many other illnesses. As we know that environment is very pollute nowadays, because all the substances are present in environment, so they can cause various problems like cancer, heart disease, asthma, and many other illnesses. These hazards can be physical, such as pollution, toxic chemicals, and food contaminants, or they can be social, such as dangerous work, poor housing conditions, urban sprawl, and poverty. The next is environmental related health issues. There are so many environmental related health issues are as follows. The first is infectious diseases. Second is disposal of chemicals. Third is pesticide and heavy metal contamination. Fourth is occupational hazards. Fifth is noise. Sixth is radiation. Seventh is food. Eighth is settlement. Now I will explain the whole environmental related health issues thoroughly with you. The first is infectious diseases. Infectious diseases, unhygienic conditions of environment forms the breeding grounds for various deadly diseases causing organisms like virus, bacteria, vectors, etc. That means unhygienic conditions can create lots of organisms like virus, vectors, and bacteria. Infectious organisms cause food poisoning, respiratory diseases, and gastrointestinal diseases. The infectious diseases, and again again describe as thoroughly. The first is waterborne. Waterborne means that water is a pollutant in our environment. They can cause various diseases like cholera, dysentery, amoebiasis, hepatitis. ठीक है. The second is airborne. That means air is polluted in our environment. They can cause various problems like asthma, bronchitis, pneumonia, tuberculosis. Foodborne. That means the food is more polluted. They can cause food poisoning. Food poisoning, that means stomach infection is increasing when human intake
our fast food, and they can cause various problems like cholera, dysentery. Vector borne means these are problems these are problems created through vectors like malaria, typhoid, filaria. Animal borne, these diseases are occur from animals like plague disease occur from rats, rodents. Next is disposed chemicals. Chemicals are introduced in the environment by anthropogenic activities. Chemicals can be divided into the following categories: hazardous causes harm to human or animal health, the environment, or capable of damaging property. Example: explosives and inflammable chemicals. Toxic chemicals, that means toxins. Poisonous chemicals which may kill people if inhaled and indigested. As we know that if people intake the harmful poisonous chemicals, they may die, and it is very harmful to the human beings. Carcinogenic, they can cause cancer like aromatic hydrocarbons like benzene, various amines, etc. The next is mutagenic. Mutagenic affect genetic material, DNA in cells. Example: polycyclic aromatic hydrocarbon, benzene, sodium azide. The next is neurotoxins. They affect nervous system. Example: lead. These all chemicals can create so many diseases, and they are very harmful to the human beings. The next is pesticides and heavy metal contamination. Some of the pesticides inhibit hormones in humans and other species and affect क्या अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ट्यूमर्स. जब ह्यूमन कोई भी कुछ भी पेस्टिसाइड्स वगैरह इनटेक करता है, लाइक एग्रीकल्चर में आजकल बहुत ही पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं. सो जब लोग खाते हैं, इनटेक करते हैं फूड को, उसके साथ ही क्या इनटेक होता है, केमिकल्स इनटेक होते हैं. उसके साथ क्या होता है, जो पेस्टिसाइड्स इनहिबिट करते हैं हार्मोन्स को इन ह्यूमंस एंड अदर स्पीशीज, एंड दे कैन अफेक्ट रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड वेरियस एलिमेंट्स लाइक ट्यूमर्स. आजकल ट्यूमर्स का होना बहुत ही आसान हो गया है, ट्यूमर्स बहुत हो रहा है लोगों को. नेक्स्ट इज बायोमैग्निफिकेशन. मैनी केमिकल लाइक DDT and other chlorinated pesticides accumulate in food chain and show deleterious effect at the top of the food chain, like heavy metals हो गए, arsenic, chromium, lead, mercury effect on human health. The next is occupational hazards. Workers in various factories, mines, construction of dams, building, commercial farms, forestry and agriculture are exposed to risk, especially health hazards. आजकल वर्कर्स कई जगह पर भी काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, कोल माइंस में, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ काम कर रहे हैं, डैम्स जहाँ बन रहे हैं, और बिल्डिंग्स कमर्शियल फॉर्म्स में, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में. जी क्या है, बहुत ही रिस्क हो चुका है फॉर द ह्यूमन बींग्स, स्पेशली उनके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा होने लगी हैं. ठीक है, जैसे कि डस्ट से क्या होता है, लंग डिजीज होने लगती है. सिलिकोसिस से क्या होता है, डस्ट कंटेमिनेटिंग फ्री सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जो लोग सिलिकॉन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो सिलिकॉन क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, उनकी जो लाइफ जीने की जो लाइफ होती है ज़िंदगी, वो क्या हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. एस्बेस्टोसिस. फाइनेस्ट फाइबर्स ऑफ एस्बेस्टोस फाइंड एक्सेस टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट इज नॉइज.
as we know that noise pollution is very harmful to the human being. They can damage ears and elevate workplace or other noise can cause hearing impairment, hypertension, heart disease, etc. And it can affect pregnant mothers and their fetus. जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं और जिन्हें उनका उनका क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है और जो बच्चा पल रहा है उससे भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन से क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पर। कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो क्या कॉज करती है, हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है और ह्यूमन हेल्थ पर। जो क्या कॉज करता है, कैंसर, कैंसर कैंसर को क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पर। आगे क्या है, डाइट, कंटेमिनेशन ऑफ फूड कैन कॉज इनडाइजेशन। जो प्योर हम डाइट नहीं लेते उससे क्या होता है, इनडाइजेशन होने लग जाती है, हमें डाइजेस्ट नहीं होता कुछ भी, फूड पॉइजनिंग होने लग जाती है, पेट में इन्फेक्शन हो जाती है जब हम फास्ट फूड अदर मटेरियल खाते हैं। ठीक है, हार्मफुल। एंड इसके साथ क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन मेक्स ह्यूमन प्रोन टू अदर डिजीजेज। जो अंडर न्यूट्रिशन में होते हैं और माल न्यूट्रिशन में होते हैं वो जो ह्यूमंस होते हैं वो जो डिजीज़ डिजीज़ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। वो अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन मेक्स ह्यूमंस प्रोन टू अदर डिजीजेस। ठीक है, इट शुड बी intake गुड डाइट and it's very indispensable for human being. Settlement, improper settlement and poor physical environment may cause various psychological problems which affect various vital psychological processes in the body. नेक्स्ट इज प्रोमोटिंग ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज दैट प्रमोट हेल्थ एंड एक्सटेंड ह्यूमन लाइफ कैन हैव एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल दैट इज फूड प्रोडक्शन। Food production causes environmental damage from pesticides and fertilizers, soil salinization, waste produced by livestock, transportation, deforestation, and overfishing. Then next is healthcare facilities. It should be provide healthcare facilities to the human beings, like hospitals use large quantities of electricity and fossil fuels and produce medical waste. Third is disease. To prevent some diseases, it may be necessary to damage the environment. For example, malaria. Malaria क्या करता है? Malaria was eradicated in the United States and the other developed nations in 1940s and 50s as a result of draining wetlands and spraying DDT to kill mosquitoes. इसके साथ क्या होता है, जब हम स्प्रे करते हैं DDT के साथ वो जो मॉस्किटोज होते हैं वो किल करने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे हम डिजीज़ को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मलेरिया। Overpopulation, a reduction in mortality from starvation or disease can lead to overpopulation, which stresses the environment in many different ways, increasing use of fossil fuels, clearing of land, generating pollution and waste, and so on. The next is managing benefits and risk. मैनेज कैसे कर सकते हैं। For example, pesticides play an important role in increasing crop yields, but they can also pose hazards to human health and the environment. Alternatives to pesticide use create trade-offs in health. Public health authorities have opted to regulate the use of pesticides to enhance food production while minimizing damage to the environment and human health. Energy production and use help sustain human health, but it can also pose hazards to human health and the environment, such as air and water pollution, oil spills, and destruction of habitats.